अगर धर्म वापस लाना है तो युद्ध भी करना होगा। ये चेतावनी भारत की एक नारी की है। चेतावनी है आतंक के आका पाकिस्तान को। विदेश की धरती पर जाकर दुनिया के सामने पाकिस्तान के पापों का हिसाब भारत दे रहा है। दुनिया को समझा रहा है कि कृष्ण ने भी शिशुपाल की 99 गलतियां माफ कर दी थी, लेकिन 100वीं गलती और कृष्ण ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने शांति का पूर्ण प्रयास किया था, लेकिन जब अधर्मी, अनाचारी, पापी कौरव नहीं माने तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना पड़ा, और जब युद्ध हुआ तो धर्म की स्थापना हुई। पाकिस्तान के पाप का घड़ा भी भर चुका है। उसकी 100 गलतियां पूरी हो चुकी है और अब बारी है उसके हिसाब की। 9 और 10 मई को उसे ट्रेलर दिखा दिया गया है। पूरी पिक्चर अभी जल्द ही रिलीज होगी और ये सब तैयारी उसके पहले की है। दुनिया में भारत का डेलीगेशन घूमकर पाकिस्तान के उन्हीं पापों को सार्वजनिक कर रहा है, ताकि उसकी सजा उसे जब मिले तो दुनिया को उस पर अफसोस न हो। ये तस्वीरें फ्रांस के पेरिस शहर की है, उसी फ्रांस के पेरिस शहर की जहां के राफेल ने पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकी अड्डों को तबाह किया है। उसी फ्रांस के पेरिस शहर पहुंचा है ऑपरेशन सिंदूर का वो डेलीगेशन जो दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। इस ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के गुस्से को जाहिर किया है। उन्होंने यहाँ भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कृष्ण और महाभारत को याद कर वो कहा जिसे सुन पाकिस्तान रात भर नहीं सो पाएगा। जय हिंद to everyone. It is a great honor for me to be speaking from this platform today, but I was just hoping I would have come in happier circumstances to celebrate a diaspora, to speak about just how much you all have added to the value of our relationship, strategic relationship that we enjoy with France. I wish I could tell you it is because of how you all have assimilated and contributed that today France stands in solidarity with us. Ravi Shankar Prasad ji, our delegation leader, was telling us that before he came to France, before we started this tour, and our first stop was France because of the relationship that we've been enjoying with them. A delegation of members of parliament from France had come to the Standing Committee of Foreign Affairs and expressed total solidarity with India to fight the scourge of terrorism emanating from Pakistan. Let me also tell you, you all might know me, but I'm a vocal member of the opposition. A very vocal member of the opposition, yes. And I hold my government to account to ensure that the thriving democracy that I come from continues to ask questions and holds its government to account. But today I come, while being a member of the opposition, I come to express my solidarity with the 1.4 billion people back home who were equally outraged, equally angered, and probably if my voice also sounds angry because I continue to carry that anger with me, I come from the state of Maharashtra, I come from Mumbai. Mumbai saw the worst terror attack. Over 160 people dead. Not all Indians. Some from the US, some from Europe. And where is this terrorism emanating from? I don't even need to tell you all that. I'm sure people of France won't need to tell us that. People from US won't be able to tell you that. I mean, they would not need to explain explicitly that it's coming from Pakistan because all the roots of terrorism emanate from Pakistan. Terrorism has become an economic industry for Pakistan to hold the world to account. To put a blackmail, a threat on the peace across the world, not just across our region. So we come to express not just our anger, but our resolute belief that what has begun as Operation Sindoor is not just a conventional fight back. It will have a fight back in all its form, in all its possibilities, and in all the spaces possible for India to tell the world and to especially tell Pakistan that we will hold you to account for every single life that an Indian loses because of your terrorism. And that is the resolve we've come with, and we are touring 6 different capitals of Western Europe, and we go with the same message. You all suffer the same challenges that we suffer back home. We've been fighting for it for decades. And let me also leave you with just one thought. Yes, I come from the land of Gandhi. Yes, we all come from the land of Buddha. But we also come from the land of Krishna. And during Mahabharata,
when Arjuna was reluctant to fight against his own, that is when Lord Krishna had told him, अगर धर्म वापस लाना है तो युद्ध भी करना होगा. And युद्ध is not your conventional war. It is war in all its forms to ensure there is no adharma that prevails, at least in the land of peace. That is our message to the world. We want you as the brand ambassadors in France to speak up for India, to speak up for the nation, and to ensure that every wrong story that they put out there, you all are right there to correct the India story. So thank you so much and Jai Hind. जी हाँ, धर्म को वापस लाना है तो युद्ध तो लड़ना पड़ेगा. भारत युद्ध के लिए तैयार है. धर्म की वापसी के लिए बुद्ध का ये देश युद्ध भी लड़ेगा. अहिंसा को परम धर्म मानने वाला भारत हिंसा भी करेगा, क्योंकि रावण को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका वध होगा. कंस तभी मरेगा जब कृष्ण उसका सीना फाड़ेंगे और आतताइयों की मौत के बाद धर्म की स्थापना होती है और प्रजा सुखी. पाकिस्तान से भी आतंकी नाम के राक्षस का वध भारत करेगा और दुनिया को आतंक से मुक्ति दिलाएगा. ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज. वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम.